Hello guys, good morning. Don't open your mic or your video unnecessarily. You are restricted to open your mic and video. If you have any questions, please type in the chat. Also, we have shared a YouTube link in the group. So if anybody is uncomfortable in the meeting, you can join in the YouTube group, YouTube live. You can chat in the YouTube live section also. We are taking your questions from there.
Guys, we will be starting very soon. Get prepared, sit down. Guys, am I audible to everyone? Hello, you are audible, yeah. Can we start? Good morning, everyone, and a wonderful, warm welcome to all of you. I am Prasanna. I will be your host for today's event. Today, we all are gathered here for an interesting event on behalf of Entrepreneurship Cell of Haldia Institute of Technology. I would like to invite our chief guest, Shanzil sir. Hello, guys. Hello, sir. Hmm. Shall I continue with the content? Yes, sir. First, Okay. you share few words about your startup. Mm-hmm.
And Okay. what is your motto behind start your startups? All right then. So, uh, first of all, I'll let you guys know about me. I'm Shanzil. I run a community called Studentpreneur. So I see a lot of entrepreneurs, aspiring entrepreneurs here who are trying to solve particular problems or learning particular skill set in their career right now. So we have a virtual roof for them. We have a space where they can connect to each other, and I believe that humans being have thrived being in community rather than being alone. That's why we are called social animals. So the one thing that I want to do is to help leverage you guys this fact that bringing people together or coming people together can make things happen, be it a product, be it an agency, be it an idea, whatever it is, it's more executable in a community. That's the idea behind what I'm doing currently. What I have been doing since the past uh, 5 to 6 years is around the niche of community only. I made an application called Ratify, which was a community centric social media application, and it blew up for a little while in my early days. When I was 17, 18, I got grants from Polygon, Arcana, big Web3 names. I got investment support, and that was like living a good life at that time at 17, 18. But all of it crashed because nothing is just gonna go up always without you being checked on. So I did get a check on. I did get my lessons through failures, through losings, through um, falling over and over. But right now I'm here. I'm doing this. I'm building a community. I'm making a better place for you guys to thrive. So yeah, I love to talk about that today. Prashna, what do you want me to start talk about specifically right now? Sir, now my group members wants to ask few questions regarding your startup. Can we start? A questionnaire, sure, sure, yeah. Prashna, you're muted. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I want to ask a question. Mm-hmm. Go Uh, ahead. what what was the core insight that made you believe AI generated fashion could become a business model? So yeah, I mean, I did that Houdini for a while, um, and that's where we built Studentpreneur, the community that I was talking about. So the idea behind that was leveraging the use of AI, the leveraging the use of creativity on demand. Have had never had that situation in our hand ever. AI has enabled us to be creatives with just thoughts. It earlier you need to have an idea, and then you need to have a skill to be able to execute that idea into reality. Let's say design. I let's say have an idea about a crazy design idea that I have in my mind, but to make it into a reality, I need to hire a designer. I need to hire professionals to make it happen. But with the help with the use of AI, we can just prompt it out really good, as in we can word it out really good, and it will be out there with the help of AI. That was the basic idea behind bringing Houdini into play. Unfortunately, it wasn't the very best thing at that time, even today, because I believe that AI has still not catch up to human advancement of details when it comes to making clothes, especially clothes, because clothes and everything are signature material that humans being wear. It needs precision, it's need attention to detail. AI loses in a battle with humans, at least right now.
and that's the reason that Houdini is not with us right now. Okay, thank you, sir. If you guys, Sir, hi, hello. you said, sir, few of my group members asking questions in chat. Can you see there, please? No. Okay. What was the biggest assumption you made in an early stage, and how did you correct it? What's the most common mistake founders make during fundraising? What skills or habits do you wish you had learned earlier as a founder? Okay, these are interesting questions. So let me start with, what were the problems you faced, sir, in during initial days, and how did you cope up with that? So I'll tell you about a very crazy story. So when I was 17, my 12th board exams were going on, and at that time I have already made a consumer based platform. Those who don't know, a B2B based platform is more likely to sell, it's more likely to grow. But when it comes to models like B2C, as in it's harder to crack in. It's harder to crack multiple sales rather than doing little sales. As in, like business to business, man, you need to do one sales at a time, two sales at a time. And in consumer based environment, you need to do very good marketing. You need to sell to a lot of people right away in a mass quantity, to be able to attract and pull. So my basic assumption that was always wrong was to go behind consumer rather than focusing on business, rather than focusing on skill set exchange, rather than focusing on making good chunks of money by doing B2B deals, rather than focusing on attracting the masses. So for especially for early entrepreneurs like you and I would recommend you to go B2B, always B2B. That's number one, because you can sell, let's say, one big client, one big sell to one big client or one big party, and then you can be like making progress. Then you can make progress in a day, rather than doing going out in a consumer based model, that even let's say 6 months के लिए आप कर भी रहे हो कुछ, and 6 months ke baad it will absolutely 100% fail, because you do not have the capacity, resources. Not No, I don't think any student entrepreneur have the capacity to run a consumer based platform, uh, just because of their age. And I think age plays a very huge role there. Another question that they have asked is, what are the basic needs to start a startup? And I think key number one of that is problem. You need to have a problem to be able to solve it, and you need to be able to identify a problem, and for that you need to live that problem, or at least have that problem faced very second handedly, or for a very long time. So for students like you and I, we don't get to see the real world first of all to be able to experience these problems. So it's harder to solve a real world problem right away than to um, solve a digital problem. So you might be using multiple platforms that you see, and in using your platform, using different platforms at once, the problem that happens is there will be times that you will face some uh, problems in terms of friction, in terms of, let's say, Discord only, let's say, it has a lot of friction to be able to create a community. uh, there's a lot of friction in different digital environment that there is in different SaaS platform, technological platform that you and I might and can use. There we will find some problems, and there we will have to solve it, instead of going a bottom down approach. That might be key. First of all, find a cool thing to do, let's say AI, and then try to build something on it. That is never a good idea कि नहीं, I want to do कि ठीक है AI में let's find a problem. Rather find a problem and then maybe try to solve it with AI, or anything else. Maybe it requires physical hand labor, maybe it requires AI, maybe it requires web 2 tech. You need to figure that out. But the first thing that you should be able to figure out is there a problem? Is there enough people facing this problem? Is there people willing to pay to solve this problem? If these things are figured out, then and then only you can move forward.
And then other question is, what was the biggest assumption? Okay, this is I think I dealt with. What's the most common mistake founders make during fundraising? And I think that would be underestimating your age. You go out very underconfident in a meeting. I have been there. I have gone to these meetings, and I have been very underconfident, or rather, sometimes very overconfident, in the back of my head about how me alone can solve the entirety of the entire problem, entire world, whatever issue that there is. And any young blood, any young entrepreneur have that in their blood ki I'm gonna change this world, add to the world. But fundraising, and especially startups, is more about how would you make money in that particular niche by solving that particular problem. So that's a very nerd business like thinking, rather than uh, very broad set minded level skills that you see in movies that VCs expect. VCs expect you to be very well. VC expects you to know everything about your particular problem statement and solution statement, and they want best of what you can do in terms of practical solutions, not like we can solve this by making a thermal plant of nuclear energy right away. They need to know pragmatic solutions that you are offering right away in order to know your viability. You can go out there, talk about your vision and everything, but trust me, they have listened to a lot of different, and they care about is money. So until and unless you are trying to do everything on your own, like some of the founders like Zerodha, you do not want to go out and uh, you do not want to go out and you do not want to go out in this industry to the VCs and talk about your big visions, big reality, big dream right away. That's number one mistake that young founders do just because of great aspirations. What skills or habits do you wish you had learned earlier as a founder? Sales. 100% sales. The answer to this question, to any founders, to any entrepreneurs, to even any of you guys, even in any of the niche that you are in right now, learn how to sell. If you learn how to sell, it can be very, very, very amazing. Your entrepreneurial experience can elevate by a lot. You need to be able, you can sell something to one person, anything at all, then you can use that skill to sell something that is greater, of greater value. And then you can increase the value of the product and make more money out of it, and make more value into the product, make more value in the deal itself. But the only way that you can ever do that is learn how to sell. I see a lot of entrepreneurs who have great products who do not know how to sell, and I see a lot of uh, salespeople who just sell things. Sales is not just giving a spectacular pitch that convinces you or manipulates you. It's actually cracking deal that last long term. So think of this as this way, that most salespeople, or most the mindset that there is in this industry or any industry, let's say, is that you are only dealing with the person right now, right, in this conversation. You do not think about the long term consequences of that this person, and you are also negotiating with your future self, with their future self, and then trying to make a relationship out of that. Relationships over time can give you more value in terms of selling, in terms of anything, than just trying to get the most out of the deal right away. So Indian negotiation and Indian selling is कि अच्छा ठीक है, I got it at, देखिए मैंने ऐसे rip off करके 500 में ले लिया. And what you had done at that time is not build a relationship. You can make sure that if you are sitting in a negotiation, both the parties walk out of happy, both the parties are winning. And if you can create this win-win situation, that's how you know that you are a good salesman. And if you can do it over and over, then you are a good entrepreneur, just by being a good salesman. So yeah, that's like number one skills that you should 100% focus on as an entrepreneur. Why startup? I mean, what was the reason behind to choose startup? I think startup gave me a lot of freedom in terms of not being able to follow a lot of norms
that the society has already created for me, constructed for me, that was very, I think, boring at some level and slow for me, in terms of how fast I try to learn and entrepreneurs try to learn, entrepreneurial mindset people try to learn. So rather than going out in the traditional pathway, I chose to drop out, chose to do a startup, because that exponential growth, that exponential um, learning that comes with the startup is just something that you cannot get somewhere else. It is a must have experience in your 20s as a boy, 100%. And if you're a woman, oh my god, this could be life changing in terms of how you would be dealing with your spouses, how you would be dealing with any other person in your life. If you know how to run a startup, you are dealing with all kinds of people in all kind of real world issues. And I appreciate a lot of female founders that are out there breaking the norms and doing things like that. So yeah, what would you tell your younger self if you had a chance, and what are the few things you wish you had done differently? I would first go on learning my skills, selling small things, um, doing small projects, going out for agencies at my earlier ages, doing freelancing, um, getting punches at my face by my boss, as in metaphorically, obviously not in real life. I would rather go through that than jump to entrepreneurship directly, because I think those are necessary experience each one of us should have. Internship, boss se khatai, zyada kaam karna, workload बढ़ना, you don't get value. All of that is a necessary experience in order to learn things, in order to hard learn things, rather than being very prideful about it. Ki, nahi, I'm an entrepreneur, I'll do my things my way. So that's one thing that each one of us should definitely 100% also, look back to. Our ego and go work for someone else, go work at an internship, go work at a minimum wage job. All of that is very important. What keeps you motivated during tough times? I don't think anything motivates me at this point. It's more about discipline, it's more about showing up, it's more about, if I don't show up, then I'm gonna get this client or this person or this meeting or this opportunity lose. And if I'll do enough of that, I cannot come back. It's setting me back. So it's not motivation, it's rather something that I have to do. It's like I have to eat, I have to drink. You manage your college studies with your startup work. I don't have it. I have dropped out. How and where to find a viable problem to create a solution for a startup? You first of all try finding problems that you have faced firsthand, or ask people around who have faced some problems, or talk, be an observant person. That is also one of the biggest skills that you need to be in a startup in order to excel in your startup journey. I'm doing a small business where I crack client only with help of cold conversion calling, but the 8 to 10% conversion is, by the way, very high. You do not fall for that trap. 1% conversion rate is very high. More volume. The answer to that is to call more people rather than to fix on conversions. You do not talk in a sales script. You try to build a relationship. If you're selling, you do not try to sell. You try to build a relationship. You try to talk more humanly. You try to uh, talk as if you are trying to assume the sales. So that's another lesson. How to sell is another lesson. I would love to give that someday. But 8 to 10% conversion is very high. Let's say that. What was in starting out? Who is your biggest inspiration and role model? I mean, biggest inspiration or role model, Jesus Christ. If you had a chance to come on your first year college, if you had a chance to come back on your first college days, what things you want to do you miss in that period? I don't know, man. Looking back, what is the one decision you wish you had made earlier in your entrepreneurial journey? Learn how to sell properly. Sir, I'm a mechanical engineering student, so nowadays not so many demand in market as mechanical engineer. What extra skills should I learn? Um, you can learn a lot of things apart from mechanical engineering, that is just in
and then maybe you can 100% go, as I said, talk about selling, learn about selling, and then start your entrepreneurial journey. So the entrepreneurial journey is full of good and bad moments. Sometimes we get embarrassed, while sometimes we just break through things boldly. Can you remember any of such moments you got? I don't remember it right away, but yeah, I have been embarrassed publicly. Well, I started a challenge, failed publicly, but then I got back better. So all of that is amazing. So unfortunately, I will have to wrap this up early now, because it's been like 20-30 Thank you, minutes. My sir. slot has been over. Yeah. Thank you, sir, very much for joining us. It Hmm. was a wonderful event because of your presence. Thank you Have so a much. great day, sir. Thank you so much, guys. I have an amazing career. Um, we'll connect. Obviously, I'll send my you guys. I'll connect with you guys. Okay. Bye bye right now. Take care. Thank you. Just a moment, Prasanna. I want to tell something. Everyone from the first year and the second year group, try to grab the answers from the answers he is giving to other participants. It's not necessary that he will pinpoint your name or pinpoint your chat to answer you. Okay, just try to grab, try to learn what he is saying. It's not necessary that what steps do you take, what steps do you took while doing your entrepreneurship journey. Again, asking the same question in different manner, it's not necessary. Try to grab the answers. If he's not taking your question, that doesn't mean that he's not answered your question. He can answer your question in a different way, in a different way that he answered another question. Okay, try to maintain the decorum of that. So now, as you know that some of our alumni are joining, first year guys, you might not know them, but we as a third year person, as a second year person, we know them, we have worked with them, we have talked to them. So it will be a great session coming ahead. They are joining any moment. So just try to be professional. Okay, I know that you are in first year, you are in second year, matlab, they can't expect that much of maturity from you, but try, just try to ask the professional, try to ask the professional question. Okay, that will help you. It's not necessary this, what was your memory during your college days? These are not questions that you should ask. These are questions that you should ask to the professional. Okay, try to ask the professional question. Just This meeting is being recorded. I hope everyone got that. We'll be starting the next session with our HIT alumni soon. Just prepare your questions to ask them. Am I audible? Yes, Bhaiya, you are audible. Yes.
Good morning, everyone. Good morning, Bia. Yeah, good to be among you guys. everyone, कैसे हो? अरे बढ़िया भाई, कौन कौन है यहाँ? सारे लोग हैं, सारी पूरी टीम। जी भैया। जी भैया। जी भैया। दिमाग मिलेगा है, अच्छा लगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। Good morning, everyone. The warm welcome to all of you. I am Maritri and I will be your host for your today's event. Today, we are gathered here for an interesting event on behalf of Entrepreneurship Cell of Haldian Institute of Technology. Today is not just another event, it's a homecoming. We are joined by two of our own alumni who once sat exactly where we sit today. First, we have Rohan Baya, the founder of Gym Pass. Bhaiya, I would like you to start by introducing yourself and telling us a bit about Jimpa. Sure. I am Rohan Kumar Singh, the founder of Gympass. So Gympass is a flexible fitness platform that allows you to access multiple gyms on an hourly basis. Rather than being tied to a single membership, it's allows the users to pay as you go model, where you can use any partner gym and pay only for the time you use for actually workout. We are currently incubated at iCreate, which has been an incredible support system for us. And today I would like to share our journey with you all and talk about how we got there. Aditi, move forward with the next question. Bhaiya, what inspired you to start Gympass and what specific problem does it aim to solve in the fitness industry? As I have said, the inspiration behind Gym Pass came from noticing how rigid traditional gym membership are. Many people, especially students or travelers, who find it hard to commit to one gym. So Gym Pass solved this problem by offering a pay-as-you-go model, where you can use any partner gym and pay only for the time you actually work out. This makes fitness accessible for everyone. Suppose if you are a student, you are in Haldia right now, and you are going paying for a particular gym, going for a particular gym. Suppose and in the vacation you go home for 10 days or 20 days, you will have to pay another gym in your locality just to use the gym. So as per what we have think that you pay to us, and as you go there, you pay for the hour you have actually worked out instead of for the whole month, and you are fixated for that only. So instead for paying for the whole month, you pay for the hour in our partner gyms. Bhaiya, the next question will be asked by my team members. They were asking in the chat. So, Bhaiya, please look into the chat. Okay. Mm, I have a question. sorry, I have to check from chat box or I have to check it from. Yeah, you can continue. Please ask. Could you share your journey to incubation? How you got Gympass incubated at iCreate? Sorry. Could you share your journey to incubation? How you got Gympass incubated at iCreate? Sure. So getting Gympass incubated at iCreate was our journey that started at IIT Bombay E-Summit, where we are representing our college along with a member of 70 members. We pitched our idea there among many startups. They were among 40 startups that we are presenting ideas, their idea with us. Over time, we connected with the incubators, and eventually we got into iCreate, which provided us with mentorship and resources. It was an invaluable step that helped us refine our business model and prepare for growth. Question. Take questions from the chat box. Hello, Vaya. I have a question. Yeah, dear. How has being part of the entrepreneurship cell at your college helped you on this journey, and what benefits does it offer to students? Good question. So, being part of our entrepreneur self at our college has been incredibly beneficial for me, especially for me,
because it's not just for future entrepreneurs, it's also a great way to develop the skills that you require in a pitching competition. Suppose if you are working to pitching ideas, networking, and also underlying the net startup ecosystem currently in our country or all over the world. So these skills are valuable even if you are going into a corporate job because you know where you are. It sets you apart from other your colleagues also, and give you a broad perspective. It will expand your horizon to think accordingly how the world thinks around a startup and what you need to change among you. So you will align with the how the world thinks. Thank you, Bhaiya. Hmm. Any questions, guys? Yeah, I have a question. Yeah. So. What advice would you give to students who are interested in starting their own venture? For suppose, see, my advice is to you as will be to always keep an eye out for opportunities. There is market, there is opportunity, and you have to find out which opportunity is it's required right now. There is problem, right? If you are facing a problem, and other people are also facing a problem, you know that there is a market for that problem. So you have to look out for an opportunity on that basis only. You have to solve the problem on what the people are facing in day-to-day life. And it's not about our idea. You have to know how to execute it. It's about knowing how to execute it. So get involved with your resale, attend events, learn as much you can, and attend the main thing is that attend the event. If you are attending event, you are just knowing how to go about things. Where we also while we started, we also didn't know how to go about things. But as we proceeded in our experiences, we gained experiences, and when we know, suppose that okay, we want to pitch someone, how to pitch someone. Nilambar is a great guy for you can reach out to him. He will help you out with everything. We have initial very fantastic members. They will help you out with it. They will help you create presentation. They are doing a fantastic job. I am following them and doing a very good job and letting the basic understand. You have to understand the basics that how you can't just put forward yourself that okay, my name and this is my idea. The main part is the execution. You have to show the founders, the investor that how you want to execute it. Also, you for that you have to show him that there is a first you have to understand that there is a market for it or not. You have to do research for it. Once you understand it, you have to explain the investors or someone that there yes there is a market for it. This is a problem in our society and this is how I'm solving it. Once done, you have to prepare how to pitch it to the investors. And for that, you need that ESL will help you guys, or your senior will help you that how you need to pitch your idea. And once done, it's after once you get experience, it's quite become easy for you all guys. Okay, Bhaiya, I have a question. Yeah, certainly. How to convince our parents to start a startup after BTech instead of job? Very good question. So you can't convince your parents; they are your parents, but you can tell. First, you'll be teaching them. You can see in starting something, you don't require your parent permission. First, you do the basic research. If the idea is valuable, if you there is market for it, and you are confident in your abilities that you can pull it off. If you can pull it off, you can let your parents know that I am starting to do something. If I think that it's valuable and it's in the marketplace, I will let you know. If it's not, but let him know, your parents know that yes, you are starting something of your own. Don't go into detail because they will not go think that you are distracting from your studies or something like that only. So first start with something on. Just let them know that yes, I am trying to do something. Once it's done, if you are confident in your abilities, let them know. If they are even if they are selected understanding of the marketplace, they will know okay if you are financially stable or if you can consider. Suppose if there are other members in the family, can take care of the family. You can talk to them. Okay, you take care for me. Give me 1 2 years or how many years you take want to take. I want to try something of my own. If it's feasible for you, I would like to continue on this path. If not, try other options. And once you are successful, doesn't matter to anyone how you started or when you started.
all will support you, all will say that okay, I was there when he was starting. So first, for in the first few years you have to take the blame. Hello, Bhaiya. Good morning. I have a question. Yeah, continue. Good morning. What are the wrong steps that we have to avoid during startup? Sorry, please repeat. What wrong steps like कौन सा ऐसा just like during a startup ऐसा कौन सा step नहीं लेना चाहिए जिससे वो startup बिगड़ सके? रॉन्ग स्टेप, देखो सबसे पहला गलत स्टेप मेरे ख्याल से ये होगा कि ये सोचना कि आइडिया इनफ है। आइडिया इनफ नहीं होता। आइडिया सबके पास आता है। तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे साथ बैठे हुए होंगे, तुम भी कहीं चाय पी रहे हो, तुम्हारे पास आइडिया आ सकता है। तो आइडिया इज कभी इनफ नहीं होता। मेन थिंग होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो मैटर करता है वो 10 गुना ज्यादा मैटर करता है आइडिया से। और एक बार अगर तुम स्टार्ट ये बस सोचने, बस अगर सिर्फ सोचते रह जाओगे तो आइडिया रोज आता है लोगों को। अगर ठीक है आ भी रहा है तो उसे डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि बाद में हम रिसर्च कर सके इसके ऊपर, देख सके कि इसकी मार्केट फिजिबिलिटी क्या है। और ये अगर हम ये बनाना चाहते, अभी फिलहाल आजकल इतने सारे एआई टूल्स हैं, तो कुछ कुछ आइडिया तो तुम एआई टूल से बैठे बैठे बना सकते हो कि तुम गए, तुमने देखा कि इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तुम्हें बस एक प्रॉम्प्ट डालना है। तुमने प्रॉम्प्ट डाला, अगर प्रॉम्प्ट से तुमने सही से डाला, उसके लिए तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। देखो अपने आप को स्किल करते रहो, क्योंकि अगर तुम्हें खुद से कुछ करना है तो तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें समझाया कि तुम्हें क्या करना है। तो अगर तुम चाह रहे हो, तुम कुछ कुछ आइडिया तो तुम ऐसे ही बस बैठे बैठे, तुम्हारे कुछ डेवलपर की जरूरत नहीं है, तुम खुद से बना सकते हो। तो तुमने प्रॉम्प्ट डाला, प्रॉम्प्ट डालोगे वो बन के आ जाएगा। उसके बाद देखो तुम जो चाह रहे हो वो आ रहा है, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बेसिक वही होता है कि तुम आइडिया आए तो उसे डॉक्यूमेंट करो, और डॉक्यूमेंट करने के बाद उस पर कुछ काम करो। मेन एग्जीक्यूशन होता है, बस आइडिया आने से वो वहां पे रुकना नहीं चाहिए हमें। Thank you, भैया. थैंक यू। क्वेश्चन गाइस। Yeah, one last question. How did you manage your college studies with your startup work? तो सी गाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। सबके पास ही 24 घंटे है यार। किसी के पास जो कुछ ज्यादा नहीं, मेरे पास भी कुछ ज्यादा नहीं था। तो बस मैंने बांट लिया था। मैंने प्रायोरिटाइज किया था कि चलो ठीक है, वो कि इस टाइम में मैं ये करूंगा, इस टाइम में मैं पढ़ूंगा, और इस टाइम में मैं ये इस पे स्टार्टअप पे काम करूंगा मैं। और अगर तुम देख के देखो हमारे कॉलेज में, वैसे अगर तुम अपने कामों को बांट लो, अपने समय को बांट लो, तो हमारे पास इनफ समय होता है कि हम दोनों जगह काम देखें। तो मैंने किया क्या था कि मैंने कॉलेज जब, मान लो जब कॉलेज के समय था, तो अगर तुम कॉलेज की पढ़ाई इतनी हो जाती है कॉलेज क्लासेस में कि तुम्हें घर आके पढ़नी ना पड़े, तो तुम्हें रिवाइज वाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है कि अगर तुम क्लास में ध्यान दे दोगे तो इट्स इनफ है। तुम्हारे एग्जाम क्या, तुम टॉप में भी आ सकते हो। तो मेरे ख्याल से मैंने वही किया था कि मैं अगर कुछ कर रहा था उस स्पेसिफिक टाइम पे, मैंने उसी पे ध्यान दिया कि अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मैं कॉलेज का ही पढ़ रहा था, कि चलो ठीक है, अगर मैं 4 घंटे हूँ तो मैं 2 घंटे ही प्रोडक्टिव वहां से निकाल लिया, तो फिर मेरी कॉलेज की पढ़ाई वहां हो जाती थी, बाकी समय मैं स्टार्टअप में दे दिया करता था। Thank you, Bhaiya. It was great connecting with you. Now it's time to introduce a new visionary startup founder, Nilambar Bhaiya. Bhaiya, can you hear me? अरे विजनरी विजनरी ऐड मत करो भाई. No, you are visionary that you have started a startup. It's not everyone's not to crack. Startup नहीं, consulting. It's not Okay. startup. Okay. हम profit कमाते हैं. Okay, Bhaiya. So I'd like you to introduce yourself in a brief, and then we'll go on with questions. तो मेरा एक कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम है अनब्लू कंसल्टेशन. उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2023 में एक ऐप वेबसाइट बनाने वाले से. बट देन चेंज होते होते अभी हम लोग लिंक्डइन मैनेजमेंट, पीच टेक्निकिंग एंड फंड रेजिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं. एंड बस यही है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है क्योंकि एक सर्विस बेस है ना, तो
So, Bhaiya, what was the exact vision behind starting Unblue? रीजन जो था एक्चुअली एक टेक्निकल फेलोशिप मुझको मिला था, तो रोहान भी था उस टाइम। तो एक चीज हम फिनटेक प्रोडक्ट बनाने की ट्राई कर रहे थे, बट अच्छा से वो बन नहीं पा रहा था बिकॉज हमको पैसा भी चाहिए था। तो दैट्स वाई अनब्लू बनाया था कि अनब्लू से कुछ पैसा जनरेट हो एंड वो फिनटेक प्रोजेक्ट में वो डाले। लेकिन देन अनब्लू करते करते आइडिया हुआ कि नहीं, फिनटेक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग उतना मैच्योर है नहीं, और इसमें टाइम भी ना दे तो सही है, नेटवर्क बनाने में थोड़ा फोकस करते। तो दैट्स वाई अनब्लू को उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यू किया एंड देन मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्टेड था, तो पिच डेक मेकिंग एंड फंड रेजिंग कंसल्टिंग एकदम मतलब वो स्टार्ट कर पाया। So, Bhaiya, looking back at your college days, so everyone has that day when the mind shift changes. So, what was your shift that played the biggest role in shaping your startup journey? इनसे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं स्टार्टिंग में एक एजेंसी में एज अ वेब डेवलपर था, फ्रंट एंड। तो उधर जब मैं वो भैया के साथ काम कर रहा था, तो मुझको लगा कि ओके, कॉलेज का प्लेसमेंट में ना बैठ के भी कुछ अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं, तो मोस्टली वही था। एंड उसके बाद जब वो फेलोशिप का मिला, तो ओके चलो, कुछ अच्छा खासा बन सकता है। तो ऐसे ही जने, ऐसा कुछ माइंडसेट ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ, बट हाँ भैया के साथ काम। Bhaiya, my first question is that what are the things you know right now which we will only understand after 5 years? और वॉइस थोड़ा ब्रेक हो। What are the things you know right now which we will only understand after 5 years? तारा काम What are करना, the तो मैं things? चैट में लिख दूँ, लास्ट का Okay, वर्ड मुझको समझ में नहीं आ रहा। Bhaiya, I'm typing in the chat. Bhaiya, Yeah. give me some hiding hack that you know because you hiding the toughest thing. नहीं, वॉइस लैग क्यों हो रहा है? Wait, एक minute. हाँ, Write your question in the chat box. Nilambar will take it from there. Okay. क्या पता चला? देखो, नेटवर्क इम्पोर्टेंट, मतलब किन लोगों के साथ हम काम करते हैं, किनके साथ काम करें, तो बाद में अगर हम उनसे हेल्प मांगने जाए तो वो बहुत मैटर करता है, एंड ओनली फॉर वो ही बहुत मैटर करता है। एंड सेकेंड चीज़ है, तुम क्या बना रहे हो और क्या सर्विस दे रहे हो, वो थोड़ा मैटर करते हैं। तो उस बेसिस पर भी अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हम करते हैं। Bhaiya, next one, give me some hiding hack that you know because hiding is the toughest thing. हैक, एटलीस्ट वो पर्सन पर्सन थोड़ा कमिटेड हो, मतलब कोई चीज़ों को लेके, मतलब बहुत लोग होते बोलते कि हाँ मैं करूँगा करूँगा, आप काम दे दो, बट काम जब देते तो वो करते नहीं है। एंड और एक चीज़ है कि हायरिंग हैक तो मैं नहीं बोलूँगा, गलती होता है हायर करने से, बट वो होता है कि मैं ज़्यादा अभी तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि किसी का रेफरल से कोई किसी का नाम आए, तो ज़्यादा अभी बिलीव करता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट किसी का रेफरल से नाम आए तो थोड़ा पता लगा सकते हैं, अच्छा चलो ठीक है, मे बी ये पर्सन बहुत सही रहेगा। सेकेंड चीज़ है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं, बस उनको बस काम थोड़ा करना है and बस इधर उधर से लेना है, तो इसलिए हैक तो मतलब हायरिंग का उतना कुछ हैक नहीं है, वही काम करते करते थोड़ा पता चल जाएगा कि पर्सन क्या है। Yeah, I have a question. हाँ, अच्छा, हाँ मैं देखा था। एक्सटर्नल रिलेशनशिप,
जी भैया। रिलेशनशिप का ऐसे कुछ है नहीं, मतलब देखो विजन रहा एंड तो कुछ सही से बनाने का कुछ रहा, देखो क्या नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि मेरे लिए मैं जब कॉलेज जाता तो मुझको प्रॉब्लम होता, तो मैं कॉलेज नहीं जाता सेकेंड ईयर के बाद। तो मेरे लिए वो एक प्रॉब्लम था। एक्सटर्नल रिलेशनशिप ऐसा कुछ मैंने तो कभी फेस नहीं किया, क्योंकि मुझको अभी बात है कि मुझको जो करना है कि वो करने के लिए, मतलब होता है ना कि समवन कॉल यू एंड वो बोल कि चल बाहर चलते, बट मैंने उसको कहा कि नहीं जा सकता, मुझको थोड़ा काम है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ऐसे कोई मैं रैंडमली कुछ बोल नहीं सकता इसको। कि तुम अगर सीरियस रहोगे तो तुमको पता चलेगा कि कौन सी चीज को अवॉइड करना है। कॉम ई कॉम बहुत है, ई कॉम बहुत है। इवन की फंड रेजिंग में हम लोग पिच कंसल्टिंग में है, तो उसमें क्या है ना, उसमें ई कॉम बहुत है, बट सबने एक ही चीज किया, बस उन्होंने एआई को लगाया, बस बोल रहे कि जेनरेट होगा। तो ई कॉम बहुत ज्यादा, मतलब क्या बहुत ज्यादा हो गया। एंड पर्टिकुलर ई कॉम में करना बहुत मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल है अभी। और ई-कॉम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा, बहुत अच्छा खासा पैसा एंड थोड़ा अच्छा खासा बैकग्राउंड रहे तो बहुत इजी है। अभी वो इजी, मतलब उतना इजी नहीं रहा कि वेबसाइट बना दी, थोड़ा बहुत प्रमोशन कर दिया चल जाएगा, नहीं चलेगा। तो अब अभी तो बहुत प्रॉब्लम में है ई-कॉम। और एक चीज है कि अभी इंडिया में इन्वेस्टिंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा एआई को ज्यादा जा रहा है। ई कॉमर्स एंड डी टू सी को में अभी उतना ज्यादा पैसा लोग डाल नहीं रहे। तो वो इंडस्ट्री थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। एंड ये 2 साल के बाद देखना कि जो भी स्टार्टअप को फंडिंग मिलेगा मोस्टली सब एआई रिलेटेड स्टार्टअप ही होगा। तो इसलिए ई कॉमर्स में फंडिंग लेना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है। फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन क्लाइंट मैनेज बोले तो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, इंडियन क्लाइंट के जैसे नहीं होते। उनको टाइम टू टाइम सब कुछ देना भी होता है, अगर हम मांगते भी तो वो भी होता है। तो वो बहुत अच्छे होते हैं। एंड फॉरेन क्लाइंट का डिमांड है, बट तुमको वो सर्च करना होगा कि फॉरेन क्लाइंट तुमको मिलेगा किधर से। मोस्टली मेरे को रेफरल से आ जाता है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता। बट वो ये कि हाँ, तुमको वो देखना पड़ेगा कि किधर से है। एंड फॉरेन क्लाइंट को मैनेज में एक प्रॉब्लम है कि रात को कभी कभी मीटिंग होता है। जैसे कि मैं 30 मिनट पहले सो के उठा, क्योंकि रात को मैंने मीटिंग था। तो वो टाइम एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हाँ धीरे धीरे वो सही हो जाता है। Hello, Bhaiya, I have a question. ओह अच्छा, हाँ मैं तो Actually, what advice would you give to someone if like starting their own first project or idea? पहले तो है कि अच्छा टीम बनाओ। मतलब तुम हो या तुम्हारा कोई फ्रेंड हो या कोई भी हो, तो वो जो नियर पर्सन रहता है वो थोड़ा अच्छे हो। वो चीज, वो आइडिया को लेके थोड़ा कमिटेड हो। एंड जब आइडिया होगा तब कोई ना कोई इवेंट में जाओ, वो कोई भी नेटवर्किंग इवेंट में, एंड जाके लोगों से बात करके आइडिया पिच करो। तो ऐसे करना बहुत अच्छा है। अगर फैमिली बैकग्राउंड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब उतना है नहीं तब हमको ऐसे करना चाहिए। बट टीम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फंड रेजिंग में एक चीज मैंने देखा कि जो भी मैं इन्वेस्टर के साथ काम करता हूँ, बट उनका यही कहना है कि यार टीम कैसे है। क्योंकि है ना, स्टार्टिंग का आइडिया कुछ और है, लेकिन 5 साल के बाद वो आइडिया चेंज हो जाता है। तो अगर टीम बहुत अच्छा होगा तो वो लोग बहुत अच्छे से आइडिया को एडेप्ट, मतलब कुछ और न्यू चीज को एडेप्ट करके वो आगे जाते हैं। तो इसलिए टीम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एंड कभी 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 क्या होता है, नेटवर्किंग इवेंट में टीम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए मुझको अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मुझको एक बंदे की नीड था।
तो वो बंदे को मैं मिला था एज अ बैक एंड में, हम लोगों का काम था। तो उस समय मिला था नेटवर्किंग इवेंट में। तो आई नो कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे भी होता है नेटवर्किंग इवेंट में जितना हो सके एक्सप्लोर करना। एंड और एक चीज है कि आइडिया चेंज होते रहते हैं। मतलब आज तुमको लग रहा है कि अरे ये आइडिया बहुत चलेगा, बट क्या पता ये अभी उतना अच्छा नहीं दे पाएगा। तो नेटवर्किंग इवेंट में जाओगे तो बहुत सारा आइडिया एक्सप्लोर होता है। कोलकाता में भी बहुत होता है, दिल्ली विल्ली अगर कोई रहते हो तो इधर भी बहुत अच्छा खासा इवेंट होता है। ओके भैया, थैंक यू। सच बात कहूँ तो ये बनना तो मतलब सब लोग चाहते हैं, बट हाउ टू बिकम तो बहुत ज्यादा पैसा है और फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो तब घुसो। अगर ये सब है नहीं तो तब तो 5 साल बहुत अच्छा खासा जाएगा। इसका एक्चुअल कुछ खास डेफिनेशन नहीं होता हाउ टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योर टैग भी डिपेंड करता है कि तुम क्या बना रहे हो। मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, मैं तो सर्विस बेचता हूँ, तो मैं ऐसे धंधा चलाता हूँ। लेकिन रोहन जो कर रहे हैं तो वो एंटरप्रेन्योर है, तो वैसे भी तुमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि तुम बना क्या रहे हो, उस बेसिस पे भी डिपेंड करता देखो, है। मैं आंसर देता हूँ इसका। हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर, जैसे नीलांबर ने बोला, कोई रोड मैप नहीं है इसका। अगर तुम्हें प्रॉब्लम दिख रहा है, तुम सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे हो रहा है, हम भी ट्राई कर रहे हैं। ये तो इनकी जो देखते हो तुमकी, जो 22 साल में 23 साल में पैसे कमा रहे हैं, पैसा मोटिवेशन है अगर, तो फिर तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। क्योंकि पैसा लगता भी है, उसके बाद ही पैसा आना चालू होता है। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे 4-5 साल, जैसे बताया नीलांबर में, वो पैसा कमाने में जाएंगे। यहाँ तक कि एक्सपीरियंस भी काउंट करता है, तो एक्सपीरियंस से भी तुम्हें बोलेगा। मेरे मेरे इनक्यूबेटर ने मुझे बोला है कि गेन सम एक्सपीरियंस इन द रियल मार्केट प्लेस, वर्क समवेयर और कॉर्पोरेट, और यू विल गेट द एक्सपीरियंस। कि तुम्हें काम भी करना आना चाहिए ना, तुम कैसे लोगों से बात कर रहे हो। इन्वेस्टर के पास उतना समय नहीं है कि तुम्हें सिखाने जाए कि कैसे हुआ था। ये मैं वहां गया था ई समिट में, तो उनके पास था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपके आइडिया में क्या, मेरे ख्याल से हमारी टीम का हमारी आइडिया फुल प्रूफ थी, हमारे में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब हमने पिच किया तो उन्होंने मेरे सामने 4 गलतियां निकालनी कि अच्छा तुम ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे। और फिर उन्हें जब दिखा कि हम उसके लिए सीरियस थे, तो उन्होंने फिर मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट का नंबर दिया कि तुम ठीक है, 1 महीने बाद मेरे पास आंसर लेके आओ कि तुम इस क्वेश्चन के आंसर कैसे करोगे। तो ये कोई रोड मैप नहीं है कि तुम्हें क्या फॉलो करना है। तुम किसी को फॉलो, तुम इंस्पायर हो सकते हो, दूसरे को देख के इंस्पायर हो सकते हो, दूसरों ने कैसे काम किया, दूसरों ने कैसे किया। लेकिन तो ये तुम्हारी अपनी पर्सनल होती, पर्सनल लर्निंग होती है। तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि तुम क्या क्या चूज करना चाहते हो। बीच में तुम्हें हो सकता है कुछ समय के लिए तुम्हें ड्रॉप भी करना पड़े आइडिया, तुम कुछ समय बाद वहां से वापस पिकअप कर सकते हो। लेकिन ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एक्सपीरियंस मैटर बहुत करता है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस क्या है ना, इन्वेस्टर जाएगा तो इन्वेस्टर पहले देखेगा कि यार वो बंदा जो कुछ आइडिया लेके आया, कुछ मेरे को पीच कर रहे, तो वो बंदा किधर से। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आके हाँ आईआईटी वाले हो गए तो फंडिंग मिल जाता है, कोई अच्छा सा स्मॉल टायर 3 कॉलेज से होगा तो फंडिंग नहीं मिलता है। ये सब गलत है, इसलिए है क्योंकि टायर 3 वाले को पता नहीं होता। आईआईटी वाले उनको एलुमिनाई से एंड उनका जो सर्कल होता है उनसे उनको पता चलता है, तो उनका वो बेस बनता है, तो टायर 3 में नहीं होता। तो वो मैटर बहुत करता है कि बैकग्राउंड क्या है, क्या काम किया हो, क्या नहीं किए हो। तो वो जॉब में भी सेम ही होता है कि सीवी क्या है, क्या बनाया है, डिमांडिंग स्किल क्या है, सर्विस बेस। आई थिंक लक मैटर होना चाहिए बहुत। पहले तो लक बहुत अच्छा खासा होना चाहिए सर्विस बेस में, एंड उसके बाद सेकेंड होगा कि कम्युनिकेशन कैसा है। सर्विस बेस में एक ही प्रॉब्लम है इंडिया के साथ काम करेंगे तो ये है कि आज मान लो 2 लोग आके तुम्हारे पास कुछ वो लोग क्वेरी करके चले गए, लेकिन देन उनसे जब तुम अपडेट मांगोगे तो वो अपडेट नहीं देते, तो वो बहुत चीज होता है। तो तुमको पर्सन को थोड़ा अच्छे से जांचना भी आना चाहिए सर्विस बेस में, तभी जाके थोड़ा मतलब अच्छा होता है। लक बहुत मैटर करता है क्योंकि सर्विस बेस में मतलब बहुत लोग हैं जो, मैं जब फाउंटेन डेवलपर था तो मेरे से भी बहुत अच्छे वो फाउंटेन बनाते थे, बट फिर भी उनको उतना ग्रोथ नहीं मिला क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं अच्छा था। एंड सेकेंड और एक चीज है कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा कि जो पर्सन है वो पर्सन कैसा है वो तुमको देखना पड़ेगा सर्विस में। तो
यही सब चीज मैटर करते, कम्युनिकेशन एंड लक। और बाकी उतना कोई स्किल्स मैटर नहीं करता, मतलब वो भी थोड़ा डिपेंड करते कि क्या तुम बेच रहे हो, तो उस बेसिस पर थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हैं। Priya, जैसे can you share your experience from HIT to B Summit Bombay? सॉरी HIT 2 तुमने टाइप ही कर दो, पता नहीं यार। E Summit Bombay where? ओके ओके, मैं ई सबमिट में नहीं गया, तो वो रोहन गए थे, तो मैं नहीं गया रोहन था। भैया। रोहन भैया गए थे, मैं ई सबमिट में नहीं गया तो। Bhaiya, a quick sorry. question to Rohan Bhaiya. Yeah. Bhaiya, as you are the founding member of ECEL, so can you just tell our first year and second years what exactly is the vision behind that ECEL? What do ECEL do, and what it can be, or how it can be beneficial for our college? Can you just describe it? तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं ई सबमिट में गया था अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो देखो ई सेल एक ऐसा टैग होता है, कुछ कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं जो कि लोकली होते हैं, जैसे कुछ और भी तुम्हारे हमारे कॉलेज में क्लब्स होंगे जो कि सिर्फ स्पेसिफिक हैं कॉलेज को लेके। तो तुम अगर कहीं कुछ बोलते भी हो एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, अगर तुम्हें जॉब भी चाहना है, तुम इंटरव्यू में भी बोल रहे हो, तो तुम अगर उस क्लब का नाम लेते हो, तुम्हें समझाना पड़ेगा कि वो क्लब करता क्या है। लेकिन ई सेल जैसे कुछ क्लब होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, मतलब ढेर सारे मेजर ग्लोबल या कंट्रीज में ऑल ओवर जितने भी कॉलेज है सब में होते हैं। तुम्हें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा कि वो करता क्या है। सेकेंडली, मुझे क्या लगा था, क्या अपॉर्चुनिटी की, जब मैं गया था वहाँ पे IIT बॉम्बे की ई सबमिट में, तो साउथ के ढेर सारे कॉलेज में, मतलब 400, लगभग 400 से 800 कॉलेज आए थे टोटल में। तो 400 कॉलेज में उनकी उधर इतनी अच्छी स्टार्टअप होती कि एक 40 की टीम आ रही है और 2 मेंटर के साथ आ रही है, सारी कॉलेज फंडेड। तो उधर इतनी अच्छी कल्चर है, और हमारे कॉलेज में ईसीएल तक नहीं थी। तो ये हमारे लिए लॉस थी ना, क्योंकि अगर हमारे कॉलेज में ईसीएल होती तो हमें जो खुद चीजें हमने खुद से सीखा, ये चीजें ईसीएल सिखाती। ना चाहते हुए भी अगर तुम्हारे फील्ड में ईसीएल की चीजें आ रही हैं, इसलिए मैंने बोला कि ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, ये तुम्हें बेसिक सिखा रहे हैं कि क्या होती है फंडिंग, क्या होती है, कैसे उठा सकते हो बड़ी बड़ी स्टार्टअप के पीछे, क्या उनकी बैक स्टोरी रही। तुम ना चाहते हुए तो अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, तो तुम्हें आइडिया लगता रहेगा कि अच्छा ये काम कैसे करती है। ये मतलब बेसिक सी नेसेसिटी है। तुम कुछ देख भी रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। तुम्हारा ब्रॉडर थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेगा। तुम बस ये नहीं देखोगे कि अच्छा ये कंपनी है, तुम ये भी सोचोगे कि कंपनी काम कैसे कर रही है। और मैं वहां पे गया था तो ढेर सारे लोगों से मिला, दूसरे रीजन के लोगों से मिला। अब मैं जब पिच करने के लिए बैठा हुआ था, मैं मेरा दोस्त आर्यन, तो हम पीछे बैठे हुए थे क्योंकि हम तो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट तो उस समय पहली बार एक्सप्लोर कर रहे थे। तो बैठने के बाद हमें बोला नहीं गया, बस 10 मिनट के बाद ही सारे लोग, सारे स्टार्टअप जो रेडी थे, वो उठ के एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चालू कर दिया। पहले वाले रूम में सिर्फ इन्वेस्टर बैठे हुए थे और पीछे वाले में स्टार्टअप बैठे हुए थे। ये उठ के खुद जाके अप्रोच कर रहे थे, जबकि ऑफिशियल टाइम हमारा चालू भी नहीं हुआ था। उससे पहले ये खुद उठ के गए, आगे बाके इन्वेस्टर से बात करने लगे, और धीरे धीरे, और सारे रेडी थे। उन्होंने अपॉर्चुनिटी के लिए क्रिएट किया, उन्होंने, वो वेट नहीं कर रहे थे। वो सबके पास कार्ड थे, बहुत ने हमसे भी आके बात की, हमारी कार्ड मांगे, लेकिन हमारे पास कार्ड नहीं, क्योंकि हम उस समय तक, हमें वो पता ही नहीं था उस चीज के बारे में। अगर हमारे उस समय हमारे पास ईसेल होती तो हमें पता रहता कि आप किसी समिट में जाओ या कहीं भी जाओ तो आप क्या लेके जा सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें होती है जो मुझे लगा कि मेरे बाद आने वाले जूनियर्स को फिर से स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़े, क्योंकि जो चीजें हमने सीख ली है वो अगर तुम्हें फिर से करना पड़े तो फिर हमारे रहने का फायदा क्या होगा। तो ये एक पेज प्रोवाइड करेगा तुम्हें, इसके ऊपर तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर एक किसी की भी ये मदद अगर इससे हो पाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों चीजों में काम करेगा। ये तुम्हें प्लेसमेंट में भी काम आ जाएगा, इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। और ये तो मेन मेन इसका मोटिव था कि अगर कोई स्टार्टअप में या एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाना चाहता है तो उसको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करे, बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करे। धीरे धीरे इसकी अलुमनाई कलेक्शन अच्छी चली जाएगी तो फिर ये एग्जाम्पल देख लो। ये जब मैं वहाँ ई सबमिट वाले जितने भी गेस्ट लेक्चर आए थे, ऑलमोस्ट ऑल जितने भी थे वो सारे वो IIT बॉम्बे के ही एलुमनाई थे। तो और उन्होंने कैसे एक दूसरे को कांटेक्ट किया था कि मान लो फंडिंग के लिए जरूरत पड़ी या किसी गाइडेंस के लिए जरूरत पड़ी, तो बस उन्होंने अपनी एलुमनाई चेन को एक्टिव किया और
ऐसे ही अप्रोच किया कि मैं आपके कॉलेज का भैया, मैं आपके कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, या ऐसे ऐसे ही उन्होंने फंडिंग और मेंटरशिप दोनों प्रोवाइड किए थे। तो एक अगर एक बेसिक कुछ दिनों कुछ सालों बाद इसकी एलुमनाई सेटअप अच्छी हो जाएगी तो ये हमारे भी काम आएगी। जैसे कि मैं जब वो फिनटेक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो उस मैं बोल का एक एंजल इन्वेस्टर से मिलने गया था। तो उन्होंने कहा था कि तुम एक काम करो, तुम ना कॉलेज का ईसेल से आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन वो बना लेके आओ। तो मैं बोला भाई कॉलेज में ईसेल किधर से है? वो तो है नहीं। तो ईसेल होता है तो बहुत फायदा देता है। और दूसरा क्या है ना, जॉब वही मतलब जॉब में भी हेल्प है। लोग बोलते हैं यार बहुत हो गया बिजनेस है सब, तो चलो जॉब वो कर, तो उसमें भी बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है उसमें। और इसलिए आईआईटी वाले हमेशा अच्छे खासे पैकेज मतलब वो फंडिंग लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। जो टायर 3 टायर 2 कॉलेज में उनको पता नहीं होता। और एक चीज होता है कि कुछ कुछ ईसीएल क्या करते हैं ना, इनिशियली वो कुछ फंड भी प्रोवाइड करते हैं, तो किसी कुछ आइडिया को लॉन्च करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए भी वो भी हेल्प हो जाता है। बहुत बहुत मैटर करती है। दूसरा कॉलेज में हम लोगों का इंक्यूबेटर है, बट वो मैं जब उस टाइम सर्च कर रहा था तब पता चला, तब वो इंक्यूबेटर सॉफ्टवेयर एंड इन सब चीज़ों में नहीं था। वो मोस्टली मतलब हार्डवेयर में वो लोग इंक्यूबेट करते हैं, बट वो ये उतना फ़ायदा कुछ नहीं देता। भैया मेरा एक क्वेश्चन है नीलंबर भैया से। What legal steps should we do to start our business? देखो डिपेंड करते हैं कि तुम अकेला करोगे या किसी और को लेके करोगे। अगर तुम अकेला करोगे तो तब तो सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चला लोगे। अगर किसी और के साथ मतलब 2 पर्सन, एक और पर्सन ऐड होगा या और 3-4 पर्सन ऐड होगा, तब तो सिंपली एक डीड बना लो एंड पैन कार्ड बना लो एंड देन एंड, और कुछ कुछ ज़्यादा करने की नीड नहीं है। तो लेकिन तुम अभी कुछ प्रोडक्ट बना लिया, अभी उसको तुम मार्केट में टेस्ट कर रहे हो एंड देन तुमको लगता है कि ओके मेरे को अभी फंडिंग की है और लोन की नीड है, तब जाके एलएलपी करो, तब जाके पीवीटी करो। नहीं तो सिंपली डीड बना लो एंड पैन कार्ड बना लो, उस नंबर पे मतलब उस नेम पे अप्लाई करके देन उतना ही काफी है। अकेला हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप लेना। और दूसरा आजकल तो वो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। आईएसओ का सर्टिफाइड भी होगा तो वो भी बहुत अच्छा होगा। तो भैया Okay, Bhaiya, one last piece of advice you want to add in for this event for our juniors? हाँ। तो तुम लोग के पास ना भी सच में बहुत टाइम है। जब मैं था तो कॉलेज में तो सबको पता है कि कॉलेज में उतना प्रेशर नहीं होता, बार बार कॉलेज जाके अटेंड करना है एवरीथिंग, एंड एग्जाम का लोड उतना कुछ रहता नहीं है कि हाँ पढ़ना है। तो टाइम बहुत है। एंड और एक सेकंड चीज है, एज अ बीटेक स्टूडेंट होता है ना हम लोग को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। मतलब कोई अगर बीटेक वाले कुछ बात करेगा, कोई बीसीए वाले बात करेगा ना, तो सब लोग बीटेक वाले को सुनेंगे। तो आई थिंक तुम सब में से आई डोंट नो कितना लोग सीएससी में हो, कितना लोग ईसीए वो में हो। तो आफ्टर ऑल देखो पूरा डेप्थ नॉलेज ना हो अपनी सब्जेक्ट की और अपनी फील्ड की, बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज रहे वो बाद में जाके फायदा देता है। एंड और एक चीज है, टाइम बहुत होता है। एज अ बिजनेस में एक ही चीज है कि नेटवर्क मैटर करता है, किसके साथ उठते बैठते हो वो मैटर करता है। और मैं जो बार बार बोल रहा था लक, उनकी वजह से तुम्हारा लक भी बहुत अच्छा होता है। तो टाइम बहुत है, कुछ ना कुछ बनाओ, कहीं ना कहीं जाके जॉब करो। और मैं बनाने से मैं ज्यादा बोलूंगा कहीं ना कहीं जाके काम करो, क्योंकि मैंने जो चीज गलत किया था, मैं उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं वो फिनटेक प्रोडक्ट डेवलप करने में घुस गया। तो वो मेरा गलती था कि मैं अगर कहीं थोड़ा और अच्छे से काम करता, थोड़ा और नॉलेज लेता, मैं डायरेक्टली फिनटेक प्रोडक्ट डेवलप करने में घुस गया। तो कहीं थोड़ा बहुत काम करता, थोड़ा और नॉलेज मिलता, तो मैं उसको बहुत अच्छे ले पे मतलब बहुत अच्छा खासा मैं उसको कर पाता। बट वही तो उस टाइम नॉलेज उतना अच्छा नहीं था, मैच्योरिटी नहीं था। तो एक अभी टाइम है, कोई ना कोई स्टार्टअप में जाओ। कोलकाता में बहुत अच्छे से स्टार्टअप होते हैं जो बाद में जाके बैंगलोर में शिफ्ट होते हैं, वो अलग बात है। बट ऑनलाइन तो आजकल बहुत पॉसिबल है। तो बस टाइम है, बीटेक स्टूडेंट है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो बस
कोई ना कोई जगह में जाके काम करो, नहीं तो छोटा मोटा फ्रीलांसिंग भी हो तो वो करो, बट हाँ क्लाइंट सही होना चाहिए एंड जो भी जिसके साथ काम हो तो फाउंडर सही। और एक चीज है कि इंजीनियरिंग की एक चीज बहुत अच्छा होता है ना कि हम लोग बहुत जल्दी से अडेप्ट कर पाते हैं, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। किसी चीज को डेटा सेंटिंग हम जो देखते हैं ना वो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देता है हमको, तो वो चीज हम लोगों के लिए पॉजिटिव है। तो इन चीजों को और ज्यादा डेवलप कैसे हो वो देखना चाहिए हम लोगों को, जितना से जितना हो। Rohan Baya, a last piece of advice from your side also. देखो, जैसे नीलांबर ने कहा था कि एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, या तो तुम खुद से लोगे या तुम्हें लेना आगे जाके सामने वाले ही तुम पे, इन्वेस्टर जब पैसा लगाते हैं तुम्हारे बिजनेस के साथ साथ तुम पे भी लगाते हैं, तो वो अगर ये नहीं देख पाएंगे कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे कम्युनिकेट भी करना है या कैसे करना है, तो वो बोलेंगे, वो एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कहीं काम करो, इन एक्सपीरियंस लो। एक्सपीरियंस में तुम बस सिर्फ काम नहीं करते, तुम बहुत कुछ करते हो कि क्या हायरार्की ऑफ चेंज होती है, कम्युनिकेशन कैसे करना होता है, कैसे एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो ये चीज तुम्हें सीखने के लिए या तो अभी तुम कर सकते हो या तो तुम्हें बाद में करना पड़ेगा। और अभी जैसे कि तुम लोग फर्स्ट या सेकंड ईयर में होगे तो बहुत समय है, तो अभी तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें नेटवर्किंग का बात किया, नेटवर्किंग तुम्हारे अगल बगल तुम क्या देखोगे, जो तुम्हारे क्लासमेट हैं उनका भी तुम दोस्त हो, वो तुम्हारे दोस्त हैं, तो ये नेटवर्किंग नहीं हुआ। तुम कॉलेज में, मुझे हार्डली मैं नीलांबर से मिल पाया था कॉलेज में, जो कि हमारी थिंकिंग मैच कर रही थी या कि हम कुछ करना चाह रहे थे इधर वाले। और तुम्हें भी पता है कि मोस्टली उधर के, मतलब तुम्हें कैसे उधर के मिलेंगे, तो नेटवर्किंग के और लिए एक चीज तुम मैं क्या। ऐड करना चाहता हूँ, रोहन से मिला कैसे पता है? मैं रोहन के कोई फ्रेंड से पहले मिला था, तो उससे भी मिला था कोई अपना एक फ्रेंड से, तो दिन मेरे को रोहन के बारे में पता चला, पता चला अरे वो एचआईटी में पढ़ता है। तो ऐसे ही मतलब नेटवर्किंग काम में आता है। पहले मैं रोहन को नहीं जानता था, बट हाँ जानता था कि उसने कॉलेज में कुछ एक जीता था प्रोजेक्ट को लेके, बस इतना जानता था, बट उतना पता नहीं था इसके बारे में। तो नेटवर्किंग बहुत कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो वही होता है ना कि तुम्हें लाइक माइंडेड इंडिविजुअल मिलेंगे लाइक माइंडेड इवेंट में, तो तुमको अगर इस ई समिट में जाओ, अभी आईआईटी खड़गपुर वाली भी होती है, वहां जाओ, हाइकथॉन में जाओ, एक बढ़िया टीम बना लो। एक बार टीम बन जाएगी, तुम्हें पता है कि इसकी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है, उसको लेके जाओ। और ये बस वहां पे वो करने के लिए नहीं जाते हैं, मतलब कि तुम्हें एक्सपीरियंस भी गेन होता है। तुम अगर 4 दोस्त जा रहे हो तो तुम एक अच्छी एक्सपीरियंस होती है, तुम लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब मान लो मैं अगर आईआईटी बॉम्बे गया था, तो मैं अब अगली मोस्ट, मतलब चलो ठीक है, टॉप हुआ कि मैं गया भी वहां पर तो एज अ गेस्ट लेक्चर गया, मैं अब कभी स्टूडेंट वापस वहां जा नहीं पाऊंगा। तो ये सब चीजें वन टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तुम्हें इसकी यूज करना चाहिए। कभी अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले तो इसे जाने मत दो, सोचो, कोशिश करो कि जाके एक्सप्लोर कर पाओ, जाके फायदा उठा पाओ इन चीजों का। बाकी अभी तो यार थोड़ी सी समय है, थोड़ा कॉलेज लाइफ भी इंजॉय कर देना, कॉलेज लाइफ भी वापस नहीं आती, तो दोनों चीजें साथ में मैनेज कर पाओ। जब मैं बोला ना कि जो कर रहे हो बस अच्छे से करो, अगर एंजॉय कर रहे हो तो अच्छे से करो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब स्विच करना है। अपने टाइम को बांट लो, प्रायोरिटाइज करो उस समय उन चीजों को। और एक चीज है, इन सब जर्नी में ना अप्स एंड डाउन बहुत होता है, तो उसको भी तुम लोग बाद में थोड़ा अच्छे से सीख, मतलब मैच्योरिटी आ जाएगा कि कैसे हैंडल करें, तो वो बाद में जॉब में जाके फायदा देगा या बाद में कुछ बिजनेस करो तो उसमें जाके फायदा देता है। बहुत अप्स एंड डाउन होता है। कभी कभी लोग फोन नहीं उठाते, बोलते हैं कि हाँ हम आज मीटिंग करते हैं, कंटिन्यूअसली फॉलो अप ले रहे हो, बोलता है कि अरे मैं आज बिजी हूँ, परसों मीटिंग करते हैं, तुम एक्साइटेड हो परसों मीटिंग करेंगे, फिर नहीं होता है, तो बहुत होता है ऐसा। अच्छा हाँ, और एक चीज मैं मेंशन करूंगा ना, प्लीज अपना लिंक्डइन एक्टिव करना। लिंक्डइन बहुत हेल्प करता है, मेरे को लिंक्डइन ने बहुत हेल्प किया। और एक चीज है कि कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी फाउंडर जब तुम्हारे बारे में सर्च करते हैं तो पहले ना वो लिंक्डइन जाके देखते हैं कि बंदे ने कुछ अपडेट किया है कि नहीं। लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन बहुत ज्यादा ओवररेटेड हो गया, ये सब फालतू का बात है। अच्छा कंटेंट डालोगे तो अच्छा कंटेंट लोग देखेंगे भी। खाली सर्टिफिकेट डाल रहे हो कि कोर्स ऑफ कहीं का किसी इंटर्नशिप करते हैं, वो सब मत करना, कुछ अच्छा खासा कुछ डालना, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको डालो, कंपनी को टैग करके दे दो, या तुम्हारा कोई अच्छा कोई फेवरेट फाउंडर हो, एंजल इन्वेस्टर, उनको टैग करके दो। उनको टैग करोगे तो उनका रिगार्डिंग सब पर्सन देखेगा। तो लिंक्डइन बहुत महीने में मतलब लिंक्डइन एक्टिव करना, क्योंकि जब लिंक्डइन में एक्टिव हो गए ना तो बहुत लोग रीच आउट करते हैं तुमसे।
मेरा अनब्लू कैसे चला पता है? ओनली फॉर मैं लिंक्डइन पे कंटेंट डालता हूँ। मैं कभी किसी को कोई भी प्रमोशन उधर नहीं किया। मोस्टली रेफरल से आते हैं, नहीं तो लिंक्डइन पे कंटेंट डाला, लोग रीच आउट करते हैं। 10 पोस्ट डालोगे, 10 पोस्ट नहीं चलेगा, 11 नंबर पोस्ट बहुत अच्छा चल जाएगा। तो लिंक्डइन एक्टिव करना बहुत ज्यादा, उधर से बहुत अच्छा खासा रेफरल मिलता है, कनेक्शन मिलता है, लोग बात करते हैं। नेटवर्क के लिए वो बहुत ज्यादा इजी होता है। मतलब बहुत लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो उनके लिए आई थिंक लिंक्डइन बहुत बेटर है कि ठीक है वो बात ना करे, चैट टाइप तो कर ही सकते हैं। तो लिंक्डइन में एक्टिव रहना। अभी बात है कि फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कौन सा पीपल के साथ तुम कनेक्शन में हो, वो मैटर करते हैं। फीड अच्छा होना चाहिए। फीड अगर बुरा फीड हुआ तो तब तो गया। तो फॉलोअर्स में फोकस मत करना, कनेक्शन में फोकस करना कि किनको मैं कनेक्शन भेज रहा हूँ, कौन कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी बहुत लोग बोलोगे सर अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं भाई, तो ठीक है, कुछ नहीं किया तो कहीं ना कुछ एक आर्टिकल ही लिख दो। मैंने लिंक्डइन पे फर्स्ट आर्टिकल डाला था कि गोल्ड को कैसे बाई करें, कुछ ऐसे ही रैंडमली मैं लिख देता। बट हाँ, सेकेंड आर्टिकल में थोड़ा अच्छे से सर्च करके लिखा। तो वैसे ही कुछ भी हो दो डालो, कुछ आइडिया हो, प्रोजेक्ट हो, बस कुछ ना कुछ लिखते जाना। दूसरा चैट जीपीटी आ गया, इतना एआई टूल है, कुछ ना कुछ वो अच्छा खासा बना ही देगा। कि एक मैं एक फाउंडर का नाम मैं पॉडकास्ट देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनका आइडिया, एआई का था उनका। तो मुझको इतना अच्छा लगा था तो मैंने आ, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होकर उनसे सवाल भी पूछा था। तो वो अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन ही देता है, वो कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देता। तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। हाँ, वो जो कि वो फाउंडर का उतना मतलब 10,000 फॉलोअर्स नहीं था, 7,000 ना 8,000 था, बट फिर भी वो एक्टिव थे लिंक्डइन पे। क्योंकि मैं देख रहा था वो कंटिन्यूअसली पोस्ट डाल रहे थे एंड लोगों को रिपोस्ट कर रहे थे। तो मैं सोचा फाइन मैसेज करते हैं उनको। आई थिंक ये 4 महीने का बात है, 4 महीने पहले के बात। एंड वो जो पर्सन थे, वो पर्सन एनवीडिया में ड्रॉप बॉक्स में वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। एंड वो उनका एआई स्टार्टअप बहुत अच्छा है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलती है लिंक्डइन। Thank you so much, Rohan Bhaiya and Nilamba Bhaiya. It was indeed a very insightful and inspiring session. आई थिंक The किसी का startup क्वेश्चन, and fintech will कम्युनिकेशन remind us. स्किल्स कैसे इंप्रूव करें? Okay, okay, Bhaiya, take that question. बस बात करते जाओ। अभी कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये भी नहीं कि बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, मैं उतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता। तो ठीक है, बट फिर भी मतलब कन्वेंस में लोगों को कैसे कर पाओ तो वो मैटर करता है। इंस्टेंट स्टोरी टेलिंग तुमको आना चाहिए। मतलब कोई ऐसे कुछ बोल दिया तो वो कैसे उसको मेकअप करिए, इंस्टेंट कैसे स्टोरीज बनाए, वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम जाके किसी को सेल ही कर रहे हो। वो इम्प्रूव होता है जब इवेंट में जाओगे ना, लोगों के साथ बात करोगे ना, तब धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कि रोहन ने बोला ना कि वो लोग आपस में मिट रहे थे, तो वो एक कम्युनिकेशन उधर हेल्प होता है। देखो, तुम जो सोच रहे हो और तुम जो बोलना चाह रहे हो वो सिंक करनी चाहिए। ऐसी नहीं है कि तुम मुझे इंग्लिश में बोलनी पड़ेगी, लेकिन एक होता है ना कि तुम्हें चीजों को आर्टिकुलेट करने आनी चाहिए। तुम क्या बोलना चाह रहे हो और तुम जो बोल रहे हो, ये दोनों बातें सेम होनी चाहिए। हिंदी में समझाओ, इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके समझाओ, लेकिन समझाओ। जैसे अगर समझा पा रहे हो तो तुम पहला स्टेप पार कर लियो कम्युनिकेशन का। दूसरा, लैंग्वेज की बात है तो लैंग्वेज तुम बोलते बोलते सीख जाओगे। इसीलिए बोला ना कि कहीं अगर काम करोगे तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें चीजें कम्युनिकेट करने आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट चीज है, तुम कितना भी सीख लो, कितना भी ग्रामर पढ़ लो, तुम्हें बीच में जब तक तुम बोलोगे नहीं, जब तक हो नहीं पाएगा। तो तुम्हें बोलना चालू करो। जब मौका मिले ऐसी जगह पर जाओ जहां अपॉर्चुनिटी मिले, बोलना चालू करो। बोलते बोलते स्टार्टिंग में थोड़े से लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारे खुद सुनोगे तो तुम्हें लगेगा मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। उसको मैंने लेके गया था इवेंट में, कोलकाता में होता। तो वो हम लोगों का सामने बहुत फाड़ू बनता है कि यार मेरे को कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। पता है क्या हुआ ना, वो आई थिंक 1 साल या 2 साल पहले क्या हुआ ना, उसको लेके गया। और वो ना एक इवेंट था, वो एक स्टार्टअप इवेंट था IIT केजीबी का, LSM करके लोकल स्टार्टअप है। तो उसका ना पसीना छूट गया क्योंकि वो ना डर गया। मैं बोला क्यों, बात कर जाके। बोले भाई क्या बात करूं मैं, बात करने कुछ है नहीं। बोले भाई इतना कुछ है बात करने का, क्यों नहीं है? तो जब तुम वो इवेंट में जाओगे ना, फर्स्ट इवेंट में प्रॉब्लम होगा, सेकंड इवेंट में धीरे धीरे तुम बात करोगे, देन तुम्हारा वो इंक्रीज होगा। एंड देन मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब
किसी के साथ जिन बात बात करो, क्योंकि वो मैटर, कम्युनिकेशन स्किल्स ही मैटर करते हैं। किसी किसी का ना आइडिया बहुत सिंपल होता है, लेकिन वो इतना अच्छा खासा सामने पर्सन को बोल देते हैं ना, लगता है कि भाई क्या फाड़ू आइडिया है। तो वो है, तो इसलिए इवेंट में जाओ, काम वाम करो, फ्रीलांसिंग में कुछ क्लाइंट व्लाइंट के साथ मिलो, तब जाके वो इनको बोलते हैं। और हाँ, बहुत बढ़िया इंग्लिश भी नहीं बोलना, वो कभी कभी बैकलैश करते, मैंने खुद देखा था। हम लोगों का इधर एक फाउंडर आए थे, तो एक्चुअली वो एंजल भी है, तो उन्होंने कहा था कि पता है नीलम, और एक फाउंडर आया था, वो बहुत अच्छा खासा मतलब इंग्लिश बोल रहा था। तो वो क्या कर रहा था, उसका ना एक सिंपल सा आइडिया था, ई कॉमर्स के लिए था, कि ई कॉमर्स में वो एआई लगा देगा एंड वैसे वैसे सब हाई फाई वर्ड यूज करके। तो जानने वाला कि जब ये बहुत बढ़िया इंग्लिश बोला, तब मेरे को डाउट है कि ये पक्का है कुछ ना घोटाला कर रहे हैं। एंड जेन्युइनली जब ड्यू डिलिजेंस में हुआ ना, तो वो पता भी चला उनको। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब फाड़ू इंग्लिश बोल दोगा नहीं, वही लोगों ने बोला जो बोलना चाहते हो वही बोलो, बट बहुत अच्छे से बोलो। लिंक्डइन प्रोफाइल सर्च कर लो, हम लोगों का नाम वही है। बस अभी वो तो हम लोग भाई बहुत टाइम है तो हम लोग के पास, जस्ट एक्सप्लोर 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 करो तो सब कुछ हो जाएगा। Thank you so much, Rohan Bhaiya, Nilamba Bhaiya. It was indeed a very insightful and inspiring session. Your startups will always remind us that with a group of students who are tired of waiting for the right moment, decide to create their own. On behalf of Entrepreneurship Cell, thank you to all the participants as well. Hope you will grab some motivation and we'll see more startups going from our college. Thank you, Bhaiya. It was great connecting with you. Thank you, Nitin. Thank you, चलो everyone. Thank you for joining. चलो, you, बाय Rohan Baya. बाय। Thank you, Nilamba Baya. Thank you, Vida. Thank you, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. Thank you, Bhaiya. Thank you. Okay, guys, the event is over. You can leave now. I will share all the LinkedIn profiles of all our respected guests in the group. And also, don't worry about the certificates. You will get your certificates within a week or two. You can just leave now. Okay.